Court said no. They were prevented by sufficient cause by not unloading the truck at the particular time. Inspection of goods in movement, seizure and return of goods on ground of expiry of e-way bill, penalty under so and so. Section 129. Failure to consider GPS tracking report. Proper e-way bill was issued to transmit goods from warehouse of ITC to West Bengal to their warehouse Jamshedpur. The vehicle reached ITC limited warehouse on within the validity. Now this is the precondition before you apply the judgment. This judgment is based on this facts कि जहां जाना था वहां ई-वे बिल की वैलिडिटी पीरियड के अंदर पहुंच गया था ट्रक. It's a finding of fact within the validity e-way bill, but due to temporary shortage of space, the vehicle could not be unloaded. The impugned consignment were taken back to warehouse to the petitioner transporter. Later, upon availability of space at the warehouse, driver was informed to park the vehicle. While vehicle was in transit from transporter value to warehouse, it was intercepted and detained in the allegation that e-way bill had expired. Agreed by imposition so and so. Next, please. Abhishek. Held. Authorities below have failed to examine the case of the petitioner on the fact that after due verification of GPS report. Now, this is another technology. GPS can help the authorities to track where did the truck go and where. जब GPS वहां जमशेदपुर गोडाउन में गया तो टाइम पे था ना. इट्स अ फाइंडिंग ऑफ फैक्ट. अब वहां जगह नहीं थी तो कहां लोड करता वो उसको. Show the vehicle had reached the consignor destination of ITC warehouse Jamshedpur well before expiry of e-way bill. The GPS tracking reports confirm the plea raised by petitioner that the consignment had reached. Now this is what I call collateral evidence. You take a plea, is this the ground? Then you have to attach the documentary evidence. So जो भी IT evidence, जो भी evidence आपके पास है, आपके reply में होनी चाहिए. Our reply is based on the collateral evidence attached with the reply to the notice. The impugned does not reflect the due consideration of the plea taken by petitioner. Then the case was remanded. Next. The order passed by and the appellate said the matter is remanded back to state authority to reconsider this rule. In key explanation, and hopefully penalty would have been quashed. Next. Now we are coming to 6-7 judgments, 8 judgments on section 67. All are different issues, but all issues we have discussed in the morning. Revision of assessment based on inspection report. Department issued notice based on defects pointed out during the course of surprise inspection. Though the petitioner had filed their objection and authorized administrative appeared before the respondent, but the petitioners were unable to give proper explanation with supporting documents. Petitioner challenged the impugned reassessment order, leaving text so and so, and subsequent recovery proceeding. Next, please. Held. After issuance of notice in form DRC 01, the respondent has issued 1-8. Thereafter, the petitioner has got any objection and not paid tax as ascertained, a show cause notice has to be issued. That is, जो प्री असेसमेंट प्री कंसल्टेशन नोटिस होता है उसके बाद आपको शो कॉज नोटिस देना है. नहीं दिया तो सारी प्रोसीडिंग आपकी इलीगल. तो वेदर इज 67 को डिमांड रिकवरी 70-74. 67 में रिकवरी नहीं कर सकते आप. 67 की रिपोर्ट के बेस पे आपको डिमांड रिकवरी 70-74 में करना है. असेसमेंट वही होनी है जाकर आपके. फिर उन्होंने इसको बोला if the petitioner has got any objection not paid tax return, show cause notice has to be issued in 74(1) of the act, and after receiving objections giving personal hearing. Remember Radha Krishan, उन्होंने 74(1) यही बोला था आपको. वहां भी ट्विन कंडीशंस हैं. आपको रिप्लाई भी लेना है, उसका पर्सनल हियरिंग भी देनी. That is why in Radha Krishan industry they wrote two pages on section 74 as well. The assessment order ought to have been finalized. In the present case, the procedure not followed. Further, it is also seen that following the impugned order, the respondent White so and so issued a communication directing petitioner bank to recover the amount due from petitioner under section 79. Section 79 deals with recovery. अगर आप पैसे नहीं देते हो, आपके पास स्टे ऑर्डर वगैरह नहीं है, 79 में आपसे बैंक से या और सेट से आपकी रिकवरी कर सकते हैं. Due from petitioner section 9 act which is not proper, the assessment order the consequent recovery are quashed. Now the respondent is directed to issue notice after following the procedure prescribed. I told you if there is a limitation period available, they can always issue a fresh notice. If the first notice is found deficient in terms of procedure or in terms of law, the authorities can always issue a second notice and issue show cause notice, and after giving an opportunity of file objection, pass appropriate orders. अब जब भी आपके पास कोई शो कॉज नोटिस आए, शो कॉज नोटिस सबसे पहले आपको देखना है कि इससे पहले को नोटिस आया था आपको 74(1) का, विच इज प्री कंसल्टेशन नोटिस, दैट इज मैंडेटरी. उसके बिना शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं हो सकता. दिल्ली हाईकोर्ट हैज हेल्ड इन 3 केसेस, बॉम्बे हाईकोर्ट हैज हेल्ड इन 3-4 केसेस. वो नोटिस पहले आपको आना है.
क्योंकि शो कॉज नोटिस के बाद पेनल्टी का वेवर खत्म हो जाता है, एडजुडिकेशन के बाद आप 30 दिन में दें, वो सारा झगड़ा करें, तब कुछ उसमें प्रोविजंस हैं। बट अगर पहली स्टेज पे आप दे देते हैं, 73 में आपको पेनल्टी नहीं देनी, 74 में आपको 15% पेनल्टी देनी। ओनली व्हेन यू डू नॉट एग्री विद द नोटिस सेंट बाय द रेवेन्यू ऑफिसर टू पे और नॉट टू पे, then he has to issue a show cause notice. So DRC 01 has no meaning whatsoever except a proper show cause notice in terms of law. In my case को रिमांड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। 67 search proceeding under 67 Act Maharashtra, sorry Madhya Pradesh. Petitioner objection as regard manner in which the search was carried out, adherence to procedure laid down in code of so and so, payment of tax penalties over the validity of such procedure held. Why I am not giving facts? Because these facts are there in the operating para of the order, so we need not type unnecessary things. The Panchnama reveals that on 25/1 a search team reached the premises of the petitioner, and the premises there were 2 persons holding, including nephew of the proprietor of the firm, were available, and signature of all these persons were obtained while carrying out the Panchnama, and then the stocks were checked. There only it was found there was a discrepancy in stock which attracted levy of tax, and the petitioner out of his free will deposited the amount of tax as well as penalty. उन्होंने कहा जी तुम्हारा 10 लाख का फर्क है, 18% 1,80,000 प्लस पेनल्टी, आप पेमेंट जमा कर दो। He did not object to this stock variation. He deposited. Now supposing you object to the variation, then the judgment has no relevance. You have to change the facts to appreciate what is the import of this particular law. Now what does the court say? Thus it is evident that the case of search itself, the amount of tax penalty was deposited petitioner and discrepancies were found in the stock, and thus there was no question of any kind of seizure. Moreover, there were independent witnesses as well as petitioner on representatives who did not raise any objection as regards search. Thus filing of application to remeasure the stock was an afterthought. मैंने कल आपको बोला था वहीं आपको लेटर देना है कि जी हमारा स्टॉक बिल्कुल ठीक है, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, वी नीड टाइम टू रिकंसाइल. बट इफ यू डोंट सीक दिस अपॉर्चुनिटी एंड डिपॉजिट ऑल योर फ्री विल, देन द कोर्ट विल से दिस इज आफ्टरथॉट. आपने कोई ताबा में कोई गड़बड़ कर ली है, हेराफेरी करके आपके सीए ने कुछ बना दिया आपका, देयरफॉर वी डोंट एग्री. Afterthought. Further, it is beyond comprehension that once the search team after search and present, the stock of coal would have remained untouched and alternate during the subsequent period. There is no infirmity as far as the order, letter impugned are concerned, and according to the present petition being devoid of merit stand. Now let us debate this judgment. That is, if I paid tax by mistake out of ignorance, can government keep the tax? Since this is a writ matter, writs are discretionary in nature. There is a difference between appeals to high courts and writ petitions. Appeals are on a question of law that flow from the act. Writ is a purely factual matrix. कोर्ट ने बोला भी तुमने खुद जमा करा, आप किस बात का तुम्हारा डिस्प्यूट है, किस बात का, भागो यहाँ से. But once you raise a question of law, supposing I were a lawyer, I raise a question of law, okay, my lords, even if the tax was deposited out of free will, now I've come to the tax was not payable, can government keep this tax? In violation of Article 265 of Constitution of India. Was there a recovery under 73-74? Why should I pay? That case would have been totally different because that would have been appeal filed to High Court or a writ filed after the order. But here in these circumstances, Madhya Pradesh High Court held, ये तुमने सब खुद अपने आप कर लिया, अब किस बात का रिलीफ है तुम्हारा, भाग लो चलो. लेकिन ये लेटरें आपको देनी है उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे you can retract a statement. Search is always criminal in nature. Like in Indian Penal Code, here also the statement you make before the officer, next day morning you can retract. We'll have a judgment on this coming up, maybe next one, I don't remember. So you can retract a statement, but you must. It should be as soon as possible. Next day morning. No, as soon as next day morning. Why speed post क्यों? जाने में नहीं ऐसे कोई ऐसे कैसे नहीं लेते. ये अब तुम जाओगे चपड़ासी के बाद वो को लेगा. गो टू कमिश्नर, उसका ठप्पा, आप उसकी पीए लेगी, आपसे ठप्पा लगा के आ जाओ. घूमते रहे लेटर.
गो टू कंसर्न एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, कैसे नहीं लेते? फिर तुम्हारे काय का वकील हो, फिर कहीं झाड़ू मारो जाकर। सैलरी लेती है आपसे, क्यों नहीं लेते भाई? काला कोट पहन के जाओ, आपसे कोई लेटर ना ले। साले बखियों में थे उड़ता पकड़ कर। चार्टर्ड अकाउंटेंट वकील किस लिए है? हमें डर लगता है ना क्लाइंट ना भाग जाए, पैसे ले रखे उससे। बस अंदर जो फियर होता है ना कि जो हमने रिश्वत खाई है 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए, वो साला वापस मांगेगा, चलो छोड़ो जाते इसको जमा करा के जान छुड़ाओ अपनी। Once you have be a lawyer, there is no question of they will not take. ऐसी हिम्मत नहीं कि इनके ना लें, एक्शन ना लें, बात दूसरी है, लेटर लेते। जो क्लाइंट चोर है वो तो नहीं जाएगा ना। ये जो लोग हाई कोर्ट में गए हैं, जो पिछले 3 केस में उनको रिलीफ मिला है, वो क्लाइंट आईटीसी चोर तो नहीं थी ना। It suits, sweetheart, it suits you and suits them. जब छोटे मोटे अमाउंट है सब करते हैं। अब मेरे पास एक रंग बाजार एसोसिएशन के 4 केसेस है मेरे पास, इनमें सब में 6-6, 7-7 करोड़ की लायबिलिटी आएगी। उनको पैसे जमा कर देगा, विल नॉट डिपॉजिट नथिंग, जो आपने करना कर लो। उस सारी सर्कुलर ट्रेडिंग आई एम वेरी श्योर, एक भी जेन्युइन सेल नहीं है उसमें, बट डॉक्यूमेंट सारे हैं। हम भी उसको इसलिए कर रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट सारे हैं उनके पास। वी हैव ए लीगली डिबेटेबल इशू। अगर किसी का 10-20-50 होगा तो छोड़ना यार, उतने आप फीस मांगोगे बाद में, और आप भी जब कहते हैं कौन धक्के खाएगा, मैं पैसे उसने देने नहीं। बट ऑलवेज हैव ए बॉल पार्क फिगर। इस हद तक हम कंप्रोमाइज करेंगे, इसके बाद हम नहीं करेंगे। अगर हम सारे ये मानने लगे, लॉ तो डेवलप होगा ही नहीं ना, तो सारा नीचे कुछ खत्म हो जाएगा। फिर लॉ को उस बात का, गवर्नमेंट ने जी 168 सेक्शन बनाए हैं बेकार, 176 सेक्शन क्या के लिए बनाए हैं? हमारे लिए तो बनाए हैं, पढ़ो इनको, सीखो। नेक्स्ट। वैट रिजीम में भी जब ये सर्वे पे जाते थे तो वहाँ वो सारा कुछ मटीरियल जमा करा के फिर वो बोलते थे कि मैं इतने पैसे जमा करा दूँ, तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख जो भी वो वहाँ पे जमा करा दूँ। लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने वो वहाँ पर उनका वो चेक जमा कराना ही तो उसको if you go through section 16, उसके एंड में लिखा है any tax paid under section 74 will not be given credit. Not 73, 74 का लिखा है सेक्शन 16 में। तो जब when you start reading after today, start reading in detail कि इनका इंटरप्ले आपस का क्या है। 68(3) आई एम श्योर आज तक आपने किसी ने नहीं पढ़ा था। आपको ईवी बिल पता था, बट ईवी बिल इज मैटर ऑफ प्रोसीजर। इट कम्स फ्रॉम 67, 68(3). वहां डॉक्यूमेंट एज में प्रेस्क्राइब, ईवी बिल इज डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड। लुक एट दिस नेक्स्ट केस, जहां बंदा सर्च कहता है तेरा इनपुट टैक्स गलत है, मैं तेरा कुछ सब कुछ तेरा खराब कर दूंगा। हाईकोर्ट ने कहा ये कहां है पावर आपको टू डिसाइड इनपुट एज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ सर्च और इंस्पेक्शन? ये कहां पावर है आपको? मुझे भी अफसर था, कहता जी मैं प्रॉपर अफसर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। दैट इज व्हाई वी हैव टू बी मेटिकुलसली केयरफुल कि अंडर व्हाट प्रोविजन व्हाट पावर एग्जिस्ट विद द ऑफिसर, दैट यू हैव टू चैलेंज। यू डोंट चैलेंज देन इट्स अ डिफरेंट रीजन। ये तो बात ही खत्म हो जाती है ना। लेट्स रीड दिस। Order of prisoner attachment. Respondent conducted search at the prisoner principal of writ petitioner. Applicant pursuant to said search dispute arose with regard to claim of input credit availed by the writ petitioner on the ground that the firm from whom writ applicants and may purchases were not found to be genuine. Respondent passed an order of various property writ applicants. Respondent also seized mobile phone, laptop, other documents from business premises of the applicant. Whether order of prisoner attachment was but taxable is sustainable. Next please. Held. Both this slide we should read carefully. You will come to know the interplay of section 83 with 67. I told you yesterday 67 has a great interplay with 83 where attachment powers exist. Power of prisoner attachment section 83 of Act should be exercised by authority only if there is a reasonable apprehension that assessee may default ultimate collection of demand that is likely to be raised on completion of assessment. Remember Radhakrishan, it is in order to do so that the tax default may be defeated, it cannot be recovered, that's why provisional attachment should come. That is Supreme Court. ये उसके बाद की जजमेंट है, 22 की जजमेंट है। Power and Secretarial Act should not hamper normal business activity of taxable person. Respondent has not only provisionally attached stock of goods
lying in factory but also has provisionally attached demat account and current account of the applicants. पैसे नहीं दिए होंगे, पक्की बात है, उसने कहा सारा सब कुछ बंद कर दें. Raw material so and so. Next please. Operation of demat current account are essentially also required for the routine business. Order of pre attachment, cost stock of good demat accounts as Quest, mobile phone so and so is also directed to be released forthwith on condition that representative shall file an undertaking for disbursement. Taken as further goods shall be retained in its original form. माल तो रिलीज कर दिया हाई कोर्ट ने. इंक्वायरी कहा था कि सारी बोगस फर्मों से माल खरीदा है, तो ही डिडंट हैव पावर. But when if you read the last portion of 67(1) or any contravention of rules or provisions of the act, if you read 67, let's read it. Or has indulged in contravention of any of the provisions of this act or rules made thereunder. So section 16 is a part of the act. उसमें सारा उसको आईटीसी को उसमें झगड़ा पकड़ा और इन्हें कहा कि ये जो स्टॉक्स हैं आप रिलीज कर दीजिए, मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म में रखूंगा, बेचूंगा नहीं. This undertaking filed in High Court. Next. This is another case which deals with 67(6). When will you seek the goods release on provisional basis? Condition of provisional release of goods, valid system, bank guarantee, once the assessee has executed a bond to the statutory authority and made payment of tax and penalty. Held. Act provides for two options to the taxable person for securing provisional release. One is execution of bond and furnishing security and other payment of applicable debt, tax, interest and penalty. There is a difference between bond and bank guarantee. It being a vital distinction between the bond and bank guarantee, once the writ applicant, what is the difference in bond and bank? Bank guarantee is irrevocable always. Bank is bound to pay without any condition. Whereas if you execute a bond, there can be a dispute between a principal debtor and a principal creditor as per Contract Act. There are cases where say that first you recover from the principal creditor, then my liability comes. Right? And bond is not in the form of a surety. Bond is only an undertaking that if he fails to pay, I will pay. Surety and bond also stand on a different footing. So surety, bond and bank guarantee, all are three different terms used in commercial law. Once the writ petition executes a bond to the the authority concerned cannot insist for a bank guarantee. Why? Read 67(6) now. The goods so seized and subsection 2 shall be released on a provisional basis upon execution of a bond and furnishing of a security in such manner, such quantum, so and so, or on the payment of so and so. कहते हैं उसने एक ऑप्शन एक्सेस कर लिया, आपने मान ली, बैंक गारंटी मांग रहे हो आप. He has the option to exercise, but court says further. The second option of furnishing the security of tax and penalty, there will be no requirement of waiving bond. अगर हमें टैक्स पेमेंट कर दी फिर किस बात की बैंक गारंटी? जो पैसा ने मांगा सारा जमा करा दिया गया आपको. The petitioner has already made payment of tax and penalty and furnished a bond to insist so and so that they release the goods. Why are we giving this judgment again? These are the also cases that have come to High Court. जहां उसने बॉन्ड दिया वो कहता है बैंक गारंटी दे. हाई कोर्ट कहता है ये कहां ऑप्शन है आपके पास कि आप बॉन्ड को बैंक गारंटी में कन्वर्ट करेंगे. Once the assessee has filed a bond to the satisfaction of the authority, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म होगी. Now this order accepting the bond from the assessee is not subject to review. You are satisfied. if 10 लाख का बॉन्ड दे दिया, बात खत्म होगी. Now you can't ask for a bank guarantee. अगर उसने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करा दी, फिर किस बात का बॉन्ड लेना आपको? The word is over between the two, bond or security or payment of tax interest of penalty. Or so either or he has done. Chapter is closed. Next. Now this is seizure of cash. ये दिल्ली हाई कोर्ट का है. It's the latest judgment. I don't know how many are you aware. It's not even circulated in the bar group. Voluntary payment or payment under coercion. Now supposing आपसे पेमेंट कराई जाती है, ऑर्डर को पास करते नहीं, कहते हैं DRC 03 फाइल करते हैं, वो DRC 03 फाइल करवा देते हैं आपसे. जो पीपल डाउट के करना है जिन्हें करना, जो झगड़ा करते रहते हैं, पर वो ही करवाते हैं. ऐसा कुछ होता है तो नेक्स्ट डे आपको वो रिट्रैक्ट करना है.
कि you visited our premises on so and so this date, and notwithstanding what documents were shown to you or the stock verification done by you, you forced us to deposit this money, which to buy peace and to avoid further harassment, we agreed to deposit. However, we hereby make it clear we did not deposit this money voluntarily. We deposited under coercion. You forced us to pay. ये लेटर आपको रिकॉर्ड पे लानी है. ये जजमेंट ये कहती है. That's why the red line are payment under coercion or voluntary. ये आपको लेटर अगले दिन लिख के देनी है, and as harsh a language as possible. That letter will become a part of your litigation if you want to pursue it further. If you don't give it, then the lawyer could say something else. Petitioner further claimed that the amount deposited by it has been erroneously recovered by respondents from the petitioner without proper adjudication. Adjudication कहाँ? 73-74 में? कहते मेरे को तो आपने एक assessment मेरी की नहीं. किस बात के पैसे लिए मेरे से आपने? Swiggy case of Bombay. Next time we'll do the detailed analysis. Whenever we have class, half an hour we discuss Swiggy case. बहुत बड़ा था, मैं इसलिए लिया नहीं आज. Held as far as the power to seize cash is concerned, the same need not be adjudicated in present petition for the reason that it's an admitted fact that on the basis of respondent the cash amounts for so seized were released in favor of the petitioner. Seize किया, release कर दिया, उन्होंने इस पे finding नहीं दी. When the petitioner clearly stated the tax liability is being discharged by it voluntarily and requested the respondent not to issue any show cause notice. This case was based on this fact. किसी वकील या CA, I know who is this person, उस गधे ने लिखवा दिया, सर मैं वॉलंटरी जमा करा रहा हूं, मेरा शो का नोटिस मत इशू करना, मेरे को लिख के दे दिया. उसके बाद दूसरा वकील कहता हाईकोर्ट चल, पैसे ले लेते उसने, रिट डाल दी. Now this was a very uncalled for writ petition because these kind of petitions lay down a law that affects everybody. नुकसान होता है ऐसे रिटों से. किसी वकील के 2-3 लाख रुपए बन गए होंगे, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ इससे. रिक्वेस्ट respondent not in relation to such and seizure, the case of coercion now being set up by the petitioner is an afterthought. यही लेटर अगर दूसरे दिन दे दी होती तो इस रिट का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि आपने नहीं दी हैं 100%. So therefore, once you start reading this judgment, apply the law, this judgment is based on a particular facts of the case. जहां ये ऐसा हुआ, कोर्ट ने कहा आप कहां से आ गया भाई तुम्हारा आफ्टरथॉट, नीचे कुछ नहीं कहा, आप कहते शो का नोटिस इश्यू मत करो, हम टैक्स जमा कैश जमा करा देते हैं. अब उसके बाद आप क्या कहते हैं, फिर आगे चलता है कोर्ट इन टर्म्स ऑफ 74(5). रीड 74(5), कल पढ़ा था हमने, दोबारा पढ़ो. जहां जहां आपके सेक्शन में ऐसे जजमेंट में आते हैं उसको बार बार पढ़ो, रट्टे लग जाएंगे आपको. The person chargeable with tax may, before service of notice and time, may pay the amount of tax along with interest payable in section 50 and a penalty so and so. तो खुद पे कर दिया था, 74 में तो आपने इन्वोक कर दिया अपने आप ही. बिफोर नोटिस, वही आप कहते हैं नोटिस मत इशू करो, 74 में लिखा है, तो कोर्ट फॉलो 74(5). Can by making voluntary deposit tax interest and penalty avail the benefit of restraint penalty 15%. Petitioner availed of remedy section 5 CGS Act and based thereupon proceeding against the petitioner arising out of such and seizure activity carried out were closed. The petitioner having availed of the relief cannot now turn around and challenge said proceedings on no merit in the present petition and the same is dismissed. With cost. With cost. 50,000 रुपए कॉस्ट लगी थी इसमें. कर सकता है. एक्साइज का प्रोविजन था, हमारे यहाँ से प्रोविजन अंडर प्रोटेस्ट का नहीं है, लेकिन यस जब आप पेमेंट करते हैं आप उस टाइम तो लेटर आपसे लेंगे नहीं ना, वो DRC 03 इज वॉलंटरी ना. और सिंस दैट इज ए अंडर कोर्शन यू आर मेकिंग दिस पेमेंट, नेक्स्ट डे यू राइट ए लेटर. DRC 03 is a statement you made if you are depositing voluntarily, kind of statement only. नहीं एक मिनट, क्या क्या मुझे नहीं पता क्या होता है, बताइए. Can we write reason? I doubt. होता है नहीं, जो खड़ा होकर बोल रहा है हाँ ना ऐसे है क्या, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड तो ना ऐसे कर रही है जो. Can you write this? सपोजिंग आपको बोला 10 लाख जमा कराओ, आपने करा दिए, आप जब चलान लेके जाते हो वो एक्सेप्ट करते हैं इसको?
हैं? एक वन बाय वन, हाँ क्या? तो वो अपने सामने खुद फिल करवाते हैं, आप अपनी चॉइस से कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकते। क्लाइंट इतना खराब होता है, उसे कहते हैं तेरे को अभी जीत पे बैठा रहे। What I am saying, notwithstanding, you write down and next day retract the statement. DRC 03 is nothing but a statement you make. Then you write कि given under coercion, they gave me a threat कि तेरे को जीप में बैठ जेल लेके जाएंगे वरना। तो मेरे पास क्या चॉइस थी? मेरा टैक्स बनता ही नहीं। But the beauty of this entire correspondence is you must know how to write this letter. You do not want to aggravate the pain of your client. So your language has to be very controlled, restrained. Simply write so and so, जो भी उसका joint commissioner है उसको लिखनी है आपको कि your team led by so and so visited our premises on so and so date. They were there for this time. They tallied our stocks. There were some technical deficiencies in our stock accounting which we wanted to explain, but they did not take cognizance of our explanation. Therefore, under coercion of being arrested, they asked us to deposit so much money and we will relieve you. So I checked with my management. They agreed to deposit money to avoid further harassment to the organization and to them personally. But however, I hereby state that this money was given by me not as per law, but under threat of being arrested. Therefore, I want to retract my statement that I made this payment voluntarily in DRC 03. ये चिट्ठी आपको लिखनी है, नहीं लिखोगे तो you will face this. तो 74(5) में आप आ गए ना, बात ही खत्म हो गई. Are you clear? Next. ये जो मैं चिट्ठियां बोलता हूं घर जाके ड्राफ्ट करो. That's how you will learn litigation. सारी की चिट्ठियां का मॉडल बन नहीं सकते, यहां बहुत टाइम लगता है उसमें. But we will try to do in next 1 month, 2 months. We'll draft such letters and give it to our entire group. Permanent letter you keep on your computer. Again, 67(6)(129)(2). Provisional return goods, expiry of e-bill, payment of tax and penalty. Petitioner case demand full tax and penalty, release of goods vehicle, and a very harsh request for release of vehicle and the goods on some reasonable conditions. आप इसके कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, कम्युनिस्ट हाई कोर्ट है, जजमेंटें लिखते हैं फॉर और अगेंस्ट द रेवेन्यू. हाँ, तो कम्युनिस्ट हैं, सारे कम्युनिस्ट हैं. त्रिपुरा में कौन है? जज भी हैं. वेस्ट बंगाल में जज बंगाली बोलते हैं. मैंने एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट में बोला था, मैं माय लॉर्ड आई एम फ्रॉम नॉर्थ. ओह, वो गवर्नमेंट काउंसिल बंगाली में बात करते हैं ओपन कोर्ट में. हमारा कोई आपका लोकल वकील है या वो है, वो आपस में बंगाली में बात करते हैं. आप क्या बात कर रहे हैं? एक प्रमोटी था, सिंगल बेंच था, हमारी हिट लगी तो उसके आगे मैं कहा, माय लॉर्ड आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई डोंट अंडरस्टैंड. ओह, आई एम सॉरी. बोलो ओपन कोर्ट में वो बंगाली में बात कर रहे हैं. हम बोले अल्लाह पे बताऊंगा मां चिड़ी से पियो को, हमें क्या पता क्या बोल रहे हैं. हमारा जो लोकल आर्ट जो फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा था वही बंगाली बोल रहा था. That's why in certain courts they have necessarily say that you have a local lawyer. रखना पड़ता है, वहां डिटेल समझ जाएंगे आप. Held that under subsection 6 or 67 the seized goods can be released on a provisional basis upon execution. Now again continue to read. All high courts are very clear कि 67 में दो कंडीशन है, बॉन्ड, सिक्योरिटी और कैश पेमेंट ऑफ टैक्स. ये दो ही कंडीशन है, तीसरी कंडीशन और कुछ नहीं है आपकी. Now can this be adjudicated to be reasonable? This judgment, when you reconcile with the Cape and fragrances, in my view these judgments are at variance with the ratio of Supreme Court judgment. But that judgment was not quoted by revenue, so therefore to that extent the judgment is per curiam. Per curiam means where a law or a judgment is not brought to the notice of the court, the judgment is passed, that can be reviewed. Upon the execution of a bond and financial security in such manner as prescribed on payment applicable to so and so, in terms of so and so, the superintendent has the power to detain or seize the goods as well as the conveyance, but also has the power to release the such goods and conveyance provisionally on furnishing bond of such security payment as found appropriate. Authorities may continue the proceeding for assessment. However, till the same is done, it would not be appropriate to continue the detention and seizure of conveyance as well as the goods. So remember 129, we read a judgment yesterday. The evidence said there is no provision to release the goods like 67(6). But court said, how can you say? You can detain the goods, why can't you release? Right? They said there's a power in 67(6) to release the goods,
this judgment on the same issue. It directed that the respondent shall release the vehicle and the goods upon the petitioner furnishing bond and payment under protest or bank guarantee of the value of 25% principal tax. Now, why I read this wrote the last paragraph was, under 129 to 129, there is no provision like 6 bank of security. So there the court exercise the discretion कि आप सिक्योरिटी दे दो 25% कैश दे दो. अगर ये खाली 67(6) का केस होता, ट्रक का डिटेंशन नहीं होता, so then the issue would have been different here. So you have to be careful when you're reading a judgment कि कौन से provision को judgment interpret कर रही है, even though they are involving 67(6). Next. We read 68(3). इसमें स्कोप क्या है? वो कहते हैं आपके गुड्स अंडर वैल्यू हैं, आपने 4 रुपए का माल 2 रुपए का बेच रहे हो, हम आपका फेयर मार्केट वैल्यूएशन करेंगे. इसको इस जज में राजस्थान हाईकोर्ट ने डिसाइड किया कि अब 68 की क्या इंक्वायरी आप कर सकते हैं. इट्स ए गुड जजमेंट. Scope of inquiry under section 68 of CGST Act by anti-evasion officer, check with officer for flying squad. Scope of powers of empowered officer while goods in transit. Validity of inquiry into alleged wrongful availment of input tax credit conducted by anti-evasion officer or check post in charge of flying squad in exercise of power. The body section 68(3) says that all transport shall carry the documents as may be prescribed. So what is the requirement? Read 68(3) again. Pick up 63 again. The government details of documents, subsection 2, carried in such shall be valid in such manner where any conveyance referred in 71 is intercepted by the proper officer at any place. He may require the person in charge of the said conveyance to produce the documents prescribed under said subsection and device for verification, that is RFD, and the said person shall be liable to produce the said document and device and also allow the inspection of goods. और इसकी 129 में 122 में पेनल्टी है. तो 68 की सिर्फ यही पावर है कि आपने ट्रक रोका, इधर ईवे बिल, टैक्स इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाओ क्या है, पैकिंग लिस्ट, वेट जो भी होता है उसमें सारा दिखाओ. अब उसने कहा था नहीं ये तो इनपुट टैक्स की क्रेडिट में जरा इंक्वायरी करूंगा 68 में, तब जरा ट्रक छोड़ूंगा. That's why I picked up this judgment. Court says what? Held if a check post officer or anti-evasion officer intercepting goods vehicle while in transit is permitted to carry on such fishing and rowing inquiry, it would impede, rather retard the free flow of trade, resulting in unnecessary, unwarranted harassment to the carrier of goods. So also to the consignor consignee. All the documents prescribed under the act were available and the goods, including its weight, was found in order. 68(2)(3 को रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना, ये रिक्वायरमेंट थी. अब कोर्ट आगे लिखता है, genuineness of the goods in transit per se is not in dispute. Enhancement documents available were found to be in order. Once the goods in question are in conformity with the documents of transit, the scope of inquiry in section 68 by so and so of flying squad ends. He cannot kickstart an inquiry relating to the genuineness of purchase and corresponding input as credit, which essentially relates to purchase of goods. अब वो गुड्स सेल कर रहा है, वो कह रहा है तेरी परचेज वेरिफिकेशन करूंगा, तो पैसे दे. टीवी लेके जा रहा है, 4 टीवी मेरे को दे दे, बाकी ले जा. वो कहते हैं ही कैन नॉट. व्हेन यू आर डिस्पैचिंग गुड, व्हाट यू आर डूइंग, सेलिंग गुड्स. सेल में आपको डॉक्यूमेंट देखने क्या है, वो कहते हैं वो देखा तेरी मैं इनपुट टैक्स की वेरिफिकेशन करूंगा, उसकी ऐसी कोई पावर नहीं है. इट्स अ वेरी गुड जजमेंट टू बी कोटेड वेयरएवर यू हैव दिस इशू. आपको 68 में वैल्यूएशन का चक्कर ही नहीं है. जो लोग करते हैं ना तेरा अंडर वैल्यूएशन है, इसमें बहुत जजमेंट्स हैं. मेरे का नहीं, इसमें मैंने कोई नहीं लिया, उसमें बहुत है. नेक्स्ट, द इंटेंशन. नाउ द कोर्ट गेव एन ऑर्डर कि 67, 68, 129 का लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है. 67 में सर्च होती है, 68 में जब आप माल डिस्पैच करते हैं आपको क्या गुड्स लेके जाने हैं, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारे आपके होने चाहिए. और 129 का डिटेंशन कब हो सकता है. कोर्ट ने इसमें बताया 2 पैराग्राफ में, ये कोर्ट की लैंग्वेज है, मेरा इसमें कुछ नहीं लिखा. The incident or occasioning of an event is an event preceding the transaction in question and completely divorced from the moment transit of goods. परचेज सेल से पहले होती और इनपुट टैक्स परचेज पे मिलता है. कहते हैं ये तो उससे पहले की ट्रांजैक्शन, उसमें क्या वेरिफिकेशन आप करेंगे. Respondent directed to release the goods and vehicle in question forthwith in case petitioner furnishes 2 solvent securities. The respondent shall not insist on furnishing a bank guarantee or cash security. Matter is listed, ordered accordingly. Held. Both the learned counsels have cited most of the judgment, but none of the deal with the scope of provisions under consideration. The scope of provisions 67 of the Act, in the light of facts like the ones at hand,
has perhaps not been examined by any constitutional court. The SECI and authorities under CNJ are giving their own. अब उन्होंने बोला किस बात की रिट भाई, अपील में जा सकते हैं आप. कोर्ट ने बोला जो क्वेश्चन रेस किए गए हैं, जो उसने कहा मैं इनपुट टेस्ट स्टडी वेरिफिकेशन करूंगा, जो सेल से पहले की ट्रांजैक्शन है, ये इश्यू पहले कभी जीएसटी में आज तक डिस्कस हुआ नहीं. दोनों लोगों ने जजमेंट्स किए हैं फॉर और अगेंस्ट. टेक नेक्स्ट, व्हाट डज कोर्ट से नाउ? All stakeholders are treating in the new GST regime with uncertainties as the path is comparatively unfamiliar, unmarked, and unpaved. The parameters of authorities' powers and degrees so and so. The impugned notice is an example of such uncertainty. A perusal of the said notice so and so shows. See, all these notices also, I have no idea, but आपको ये सारे नोटिस आपके टेबल के नीचे होने चाहिए. ये जो मेन प्रोविजन है में कौन कौन नोटिस का परफॉर्म है, इसका आपको जवाब किसमें देना है. अगर आपने टेबल के नीचे एक लिस्ट, कैन यू मेक दिस फॉर ऑल ऑफ अस? ओके, he knows, no, he has a paraphernalia of his staff also, so he'll make it. ये सारे जो जहां परफॉर्मा है, जो मेन सेक्शंस हैं, इन सबके एक परफॉर्मा किसमें नोटिस आना है, किसमें रिप्लाई जाना है, ताकि पीपल डोंट हैव टू फ्लिप द पेजेस. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस डोंट नो. आई डोंट नो एनीथिंग. आई कैन वेरी वेल से मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता. But all courts insist that the form should be in the prescribed form. A perusal of sad notes. Keep reminding him after 2 days. He's a big guy. Sir, वो you promised. ग्रुप में एक फीलर सा डाल दो, साथ में आगे लिख दो लव साइन और गुस्से वाले साइन, जो भी लिखना आपके, इसको भेजते रहो. A perusal of the sad notice issued in MO 07 shows that the respondent has jumped to propose penalty under on the pretext that as a petitioner, no one has appeared in the honor of goods and proposed penalty as a 50% of value. As against this, he was firstly required to propose penalty so and so, which would have been equal to amount of tax. Given that penalty and so, 1 लाख की जगह उसने 10 लाख पेनल्टी प्रपोज कर दी. कोर्ट कहते हैं ये कैसे कर दिया आपने? Based on this, they admitted the writ petition and listed the case for further arguments. Later on, they dismissed this. I mean, they did it and quashed everything. Next. Now this is mismatch of stock जो हम बीच में बात कर रहे थे. सर्च हुई आपका मिसमैच ऑफ स्टॉक, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप उस टाइम पे कुछ नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? एक तो कॉन्सिक्वेंस वही है जो हमने पहले देखा, दिल्ली हाई कोर्ट CGST दिल्ली के 74(5) इन्वोक करके बोला जो आफ्टर थॉट है. अब ये क्या कहती है, इसको सुनो. Discrepancy between physical stock and stock register. I told you these documents are require online accounting. You cannot say I don't know my stock. At least value in not the stock keeping units, value आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ कितना स्टॉक पड़ा है. 3-4% वेरिएशन इज ओके, बट दिस हैज टू बी एक्सप्लेन्ड. कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल यू आर डीलिंग विद ट्रांजैक्शन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ए प्राइवेट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. आपने कॉन्फ्रेंस चेक लिया 50 लाख का, 25 लाख कैश है, 25 लाख चेक है. तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि बिल मेरे पास 25 लाख के आने, 50 लाख के नहीं आने. तो आपके दिमाग में वो रहना चाहिए कि आपने स्टॉक 50% पे बिलिंग ली है, 100% में बिलिंग नहीं ली आपने. ये बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं. तो अगर आपने जिस रेशियो में कैश और परचेज किया है, जो भी किसी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है, इफ एट ऑल द पीपल डू इट, देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका कितना स्टॉक है. और आपका जो अकाउंटेंट है, दे हैव टू फीड यू ऑन डेली बेसिस कि वी आर होल्डिंग सो मच स्टॉक. आपने 50 चीजें खरीदी, 10 बिकी, ठीक है, 10 जब बिकी वो तो खत्म होगी, वो तो सेल वैल्यू से स्टॉक को लेना देना नहीं. बाकी 40 पड़ी है आपके पास, आपको उसकी स्टॉक वैल्यू पता होना चाहिए. द होल लिटिगेशन विल नेवर कम वंस योर स्टॉक इज ओके. दे डोंट गेट इनटू एनीथिंग एल्स देन, क्योंकि इनको पावर नहीं है. Mismatch between goods stored and details set for the stock register. Petitioner grievance that no opportunity was given to reconcile the alleged mismatch and statement of other abide with the petitioner present at this on-sale. Authorized plaintiff उनको अपॉर्चुनिटी दी. अब ये उन्होंने शुरू में ये ग्राउंड ले लिया था कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी स्टॉक रिकॉन्साइल करने की. आपने तो अपना पता नहीं क्या गिना फिना. फॉर एग्जांपल दे गो टू अ पेंट कंपनी. पेंट कंपनी हैज मोर देन 5000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स. इनके फरिश्ते भी स्टॉक गिन नहीं सकते. आई वर्क फॉर पेंट कंपनी, ये कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल है इनके लिए. बोलेगा जी ये लक्सोल व्हाइट पेंट फ्रॉम 20 ml टू 20 लीटर ड्रम. उनके कितने ड्रम होंगे, इनके फरिश्ते नहीं कर सकते. दे हैव टू. अब ये सपोजिंग जहां रिलायंस रिटेल पे स्टॉक कैली कर सकते हैं.
कि कितने किलो आलू है, कितने किलो टमाटर है। तो you have to remain on macro audit basis, system audit basis कि आपका कंप्यूटर में क्या स्टॉक है। वो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपकी अकाउंटिंग ऑनलाइन नहीं है। किताबें अगर हफ्ते के बाद लिखवाते हो पार्ट टाइम अकाउंटेंट को बुलाकर, उन गधों को जिनसे ये लोग किताबें लिखवाते हैं, तो फिर वो उन्हीं का सारा रिजल्ट है जो आप हाई कोर्ट में आते हैं। पार्ट टाइम अकाउंटेंट इज ए डेथ सुसाइड फॉर दी टैक्स पेयर्स। पहली बात, उनको कुछ आता नहीं, उनको अकाउंट्स में नहीं आते। मेरे पास एक आता था, एक ड्राई फ्रूट वाले का, वो हरिबाल में 6-7 दुकानों में काम करता था, बड़े सालों से आता था हमारे पास। इन्होंने बड़ा गुस्सा है, मैं कहा साला धोती पहन के आया था, गंदा सा साला पान खाता रहता है। मैं कहा क्या पढ़ रखा है? कहते जी पढ़ा कि हम तो बही लिखते हैं शुरू से, हमारा खानदानी काम। अब मैंने कहा तू जीएसटी में बही लिख रहा है इनकी क्या? तो क्या लाला था साथ, वो भी धोती वाला, कहता जी बही का तो चक्कर पड़ा हुआ है ये, उसके आज ही बही लिख रहा है। 10 दिन में आता है, महीने के 4,000 रुपए लेता है एक आदमी से, 10 दुकानें काम 40,000 रुपए कमाता है। ग्रेजुएट नहीं है, 10 फेल है, वो बही लिखता है, वो लाल वाली वहां मैंने देखी है, मेरे पास है, मेरे ऑफिस में एक भी अभी पड़ी है। अब वो जो भी लिखते हैं मुंडी फुंडी, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ा पढ़ना था उसको। अब जब ये आपके स्टॉक वेरिएशन हो, वेरिएशन माइनर भी हो, तब भी आपको चिट्ठी देनी है, सर वी शुड बी गिवन टू टाइम रिकंसाइल द स्टॉक्स बिफोर यू टेक एक्शन। नॉटविथस्टैंडिंग दैट, सिंस यू आर गिविंग, जो भी आप कर रहे हो मेरे साथ, मैं टैक्स जमा करा रहा हूं, बट दिस इज अंडर प्रोटेस्ट सब्जेक्ट टू रिकंसिलिएशन ऑफ माय स्टॉक अकाउंट्स। इसमें उन्होंने हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। नेक्स्ट, तो सेल इनवॉइस आएगा ना, अगर आपके सेल नंबर 2 में काट दे फिर बात दूसरी है। हाँ तो भाई इसीलिए तो लाया फ्रूट आइसक्रीम आज, आपको समझ आ गई क्यों लेगा फ्रूट आइसक्रीम आज। नंबर 2 में लेके आया ना, आप ही लाया ना फ्रूट आइसक्रीम आज, नंबर 2 में लेके आया ना, उसका बिल लाया नहीं। दूध कैसे खरीदा था? है? किसने कहा दूध टैक्स फ्री है आपका? सपोजिंग इसे और जो डाला ड्राई फ्रूट वो टैक्स फ्री है? अच्छा, कहते वो तो दिवाली की गिफ्ट आ रहे हैं आप। good to laugh. Now this is a on 67(5) what documents can be released, what documents cannot be released. किसी ने सवाल पूछा था, इसमें जजमेंट है। Petition seeking direction to respondent to release the documents seized in course of seizure proceedings. This is read 67(5). पढ़े कोई? जोर से पढ़ो, 3 लाइन है। 67(5) पढ़िए जोर से। The person from whose custody any documents are seized under subsection 2 shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of an authorized officer at such place and time as such officer may indicate in this behalf, except where making such copies or taking such extract may, in the opinion of the proper officer, prejudicially affect the investigation. That is, generally you are entitled, except where the officer think कि इसको देना हमारा नुकसान होगा, हम आपको नहीं देंगे. So there is an exception created in last 2 lines of 67(5). Once the show cause notice is issued, this case is based on what fact? What is the law laid down? Once the show cause notice is issued, तो सारे डॉक्यूमेंट आपके कंसीडर हो गए, तभी शो का नोटिस इश्यू हुआ। The documents and records which have not been relied upon should be returned to the party. और आपको 6 महीने में नोटिस देना है, unless the proper officer extends the time by another 6 months. Proper officer is Joint Commissioner, right? This position is even suggested in CBIC Master Circular dated so and so. The Master Circular states that a show cause notice and the document relied upon a show cause notice should be served upon the SSC for initiation of adjudication proceeding. However, the documents records which are not relied upon show cause notice are required to be returned under proper receipt to the person from whom those were seized. The respondent directed to look into so and so. जो डॉक्यूमेंट हमने शो काज नोटिस में रिलाई नहीं करने वो आपको रिटर्न करने हैं, बाकी डॉक्यूमेंट आपको शो काज नोटिस के बाद देंगे, so that whatever findings or conclusion they have to draw based on those documents, they are drawn and put into the show cause notice. Next. This is that cash issue. The definition of things is a single judge judgment, but it's a good judgment written.
It's not a DB judgment of Madhya Pradesh High Court. Petitioner contend that when such confess so and so, whether the expression things in 67(2) covers within its meaning cash. Now here they have not used the word money. Money has many ramifications. Hundi can be bank notes, draft, is all money. Cash is currency notes. That's the difference between money and cash. Money includes money includes many things, including cash. Cash includes only currency notes. Cash doesn't include anything else. Whether things in 67(2) covers within its meaning cash. Petitioner contend that when money is not included in 67(2), remember, goods does not include money. That's why we read the definition of goods. The investigating agency department is competent to seize cash held. The expression is used in so and so is confiscation of any documents or books or things. The CGS Act has to be seen as a whole, and definition clauses are the keys to unlock the intent of purpose of various sections and expressions used therein when the said provisions are put to implementation. A conjoint reading of 217, 231, all the definition we read in the morning, goods, money, etc., make it clear that money can also be seized by authorized officer. The word things appear in 67(2) is to be given wide meaning, and any of ownership within this power of proprietary or valuable right would come under the definition of thing. So cash can be seized. I personally fully concur with this judgment. बोला आपने नंबर 2 का सारा 50 लाख कैश आपने पास रखा है, या तो एक्सप्लेन करो कहां से है, बिजनेसमैन हो, नहीं करते, फिर माल बेचा है नंबर 2 का। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? 50 लाख भी उनके पास है, इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, पेनल्टी लगेगा, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। Choice is yours what you want to do, whether you go for 74.5 or you want to face 132. Choice is yours. Simply following 74.5, where tax is above 5 crore, will not absolve you from criminal prosecution. There is no exemption. Even if you go for composition under 128, even then it doesn't help you. The criminal action continues. तो जहां जब कैश सीजर होता है, दिस अ वेरी टिकली सिचुएशन. कैश आपको एक्सप्लेन करना हो ये कहां से आया है, और जो सोर्स आप बताएं, दो सोर्स विल बी वेरीफाइड. दे शैल बी सेंट समन्स अंडर सेक्शन 170. क्या आपने इतना कैश इनको दिया था, किस लिए दिया था, बताइए, आप कहां से लाए थे. तीसरा, नेक्स्ट प्लीज. It is cardinal principle of interpretation of statute that unreasonable and inconvenient results are to be avoided, artificially and anomaly to be avoided, and most importantly, a statute is to be given interpretation which suppresses the mischief and advances the remedy. Therefore, keeping in view the aforesaid interpretation of word thing, money has to be included and it cannot be excluded as prayed for petition under section so and so. The present case is at stage of search and seizure. A search has been carried out and proceedings are going on. No relief can be granted in the present petition. The authorities have rightly seized the amount of cash. So you can tell your clients, if you keep cash, अलमारी में रखो, तहखाने में रखो, जहां पर देख लेंगे आपका कैश ले जाएंगे उठा के. नेक्स्ट. ये केस था कि जो ये लोग चेक लेके जाते हैं आपसे कोर्सिवली. दिस जजमेंट इज टोटली कॉन्ट्रेरी टू जजमेंट्स ऑफ अदर हाई कोर्ट्स. इस जजमेंट कहते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ दे हैव कलेक्टेड चेक. व्हाट इज रॉन्ग? दिस इज सिक्योरिटी. बट मेनी अदर हाई कोर्ट जजमेंट से कि दे अंडर क्वेश्चन दे कैन नॉट कलेक्ट चेक, दे हैव नो पावर. वैट में भी, जीएसटी में भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं, बट आई टुक एन एक्सेप्शन जजमेंट हियर. Petitioner challenged the impugned notice the collection of check during search and seizure procedure held. The process issued for auditing of books as well as order of seizure of the documents would help the department in correlating the entries in documents and type of auditing the account. It would be too premature to comment upon the act of respondent and cannot be said to be against the provisions of statute of misuse, warranting intervention so and so. It would not be appropriate for the court to form an opinion with regard to the alleged conduct of the petitioner which is not supported by any material to prima facie bring the case within the realm of judicial review. The petition stands merit and accordingly dismissed. Next, please. ये वो पूनम judgment of residential property. Petitioner landlord lady seeking delivery of vacant possession of the premises which the petitioner has seized to has leased to Messer Alfra, against whom proceedings CGX have been initiated against the property has been sealed under 67.4. Read section 67.4.
ताकि आपको ध्यान रहे क्या है. The officer authorized under subsection 2 shall have the power to seal or break open the door or any premises or to break open an electronic device, box, in which any goods, accounts, register, or documents of the person are suspected to be concealed, where access of such premises, almara, electronic devices, box, or respectable is denied. Premises. So 67(4), he has the power to seize the premises. अगर जो प्रिमिसेस वर्ड नहीं लिखा होता उसको पावर नहीं थी. ठीक है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है और दोनों पावर, इंस्पेक्ट भी कर सकता है और सीज भी कर सकता है. Held, petitioner has leased the property in favor of Alfra. Its petitioners claim that Alfra has defaulted in paying monthly rent in view of the admitted position that Alfra is in possession of premises in question as a tenant on the strength of lease deed. The prayer to issue a direction and hand over the premises in question to petitioner cannot be granted in writ proceedings, as party shall be governed by terms of lease. The petition is misconceived and dismissed. है ना, जीएसटी वकील सिविल लॉ हायल करेगा, वहां पैसे लेगा. Like Abhishek said in the morning, this is uncharitable judgment, but law knows no equity. Once this is not in the realm of GST and is governed by your terms and conditions of lease deed, you have to follow them. GST officer cannot release the building. उसमें आप पेनल्टी क्लॉजेस हैं आपकी. इनको they are not a civil court who can order release of premises. इनको तो पावर ही है ना, कोई जो सीज कर सकते हैं. रिलीज करना है तो टैक्स सारा दे दो, आप रिलीज करवा लो. If there is condition in the lease deed, then क्या there is any contingency of taxes. any condition against the law is non-est, is void ab initio. Section 10 Contract Act. आप लिख दो जी, जीएसटी अथॉरिटी को कोई पावर नहीं होगी इसमें बिल्डिंग सील करने की. तो बोले इज दिस एनी मेक्स एनी सेंस? कोई तो सारे लिख देंगे. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. मैंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा था, इसको और कोलेटरल और भी चीजें पढ़ी, सब में ये ठीक है, ये लिखा है जो टैक्स में जो पावर है वही आप इन्फॉर्म कर सकते हो. और रिट में आप कैसे कह सकते हो मेरी बिल्डिंग खाली करवा दो, ये जी टैक्स उसने देना है, मैंने तो ना देना है. रिट बोलेगा तो जीएसटी में बताओ ना, को ला तो बताओ कहां कर दें, किसमें करें. वो कहते हैं आपने 67(6) में करा लो, टैक्स जमा करा दो, आप बिल्डिंग रिलीज करवा लो, आप जमा करा दो उसके ब्याज पे. ये तो कहीं नहीं लिखा कि टैक्स उसने जमा कराना है. टैक्स तो कोई भी जमा करा सकता है फॉर ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स. खत्म हो गई है और वो फ्रॉड कर रहा है. मैं कहता सारी चोरी की है, बट जीएसटी कोर्ट को कहां से पावर होगी? मैं मान लिया, लेकिन लैंडलॉर्ड को पता ही नहीं. क्या? हाँ तो लैंडलॉर्ड अपना फॉलो करे ना. हाँ जाए धक्के खाए. बस जीएसटी में उसको बोल लेना. मैं जीएसटी की बात ही कर रहा हूँ, बाकी हम बात नहीं कर रहे. नेक्स्ट, आई थिंक इज द लास्ट. एक और है. ओके, यहां ये केस था कि ऑर्डर अंडर 67(2) बाय पास by an assistant commissioner, not by joint commissioner. They said you are not a proper officer, therefore the whole thing proceedings are null and void. We will read the next part. Held से करते हैं. As per 67(1), the power inspection is specified to an officer not below the rank of joint commissioner. So who is the proper officer? An officer not below the rank of joint commissioner. Additional commissioner can be, commissioner cannot be adjudicating authority, or commissioner cannot be a proper officer. Special commissioner can be. The said officer of the purpose of section so and so may authorize in writing any other officer of central tax for inspection of any places of business of taxable person or person engaged in business of transporting goods so and so and so and so. For the purpose of seizure where the authorities having a reason to believe that proceedings of conviction are required in the matter to which inspection has been carried out after recording the said reason, he may exercise such power for seizure by authorizing and writing any of the officers of the Central Tax Department. In this view, the matter and looking into the order of provision so passed, the said order passed by Deputy Commissioner is without reference to the order of authorizing writing, is illegal and without jurisdiction. I will say that even if Deputy Commissioner says in his order is authorized by Joint Commissioner, it still will be illegal. He has to produce the authorization by Joint Commissioner. That is INS 01, as before prescribed. So remember, for the purpose of Section 7, proper officer is
by way of reference section 2 unless the context otherwise provides. Now this section provides contextually, otherwise is the proper officer shall be an officer not below the rank of Joint Commissioner, both for the purpose of 67(1) and 67(2) and 67(4). सीजर के लिए सब कुछ वही है और 67(6) में भी वही होगा. Next. So search and seizure, read these judgments more and more, and soon we meet. We'll give you 1 week notice. Let us plan, but we will do next time section 7 and section 14. Evaluation, we have not, section 15, sorry. We have not done that in greater detail, but now whenever we take the classes twice a month, we'll do advanced, very advanced stuff. We'll have advanced ruling if they're relevant. We'll have judgments. We'll 1 or 2 case studies we'll have, and then we will touch it. One day we will do only section 7 with all the schedules 1, 2, 3 and the tax rates. So tax rates को आपको कैसे पढ़ना है? उसमें we shall involve little HSN issues. How do we read this HSN interpretation for the tax schedules? Right? Thank you. ये लिखे किताब लिख रहे हैं? ये किताब आपके क्यों दिया? फ्री में दिया आपका मतलब क्या?